पैसा, मनी, मुद्रा, रोजी रोटी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। ये वो शब्द हैं जो ज़्यादातर हमारे सपनों की विश लिस्ट में टॉप पोजीशन पर होते हैं। हम जब किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब हमसे पूछा जाता है कि पैसा आपके लिए कितना ज़रूरी है। इज मेकिंग मनी योर बिगेस्ट प्रायोरिटी इन लाइफ? इज मनी एवरीथिंग फॉर यू इन योर लाइफ? उस वक्त कुछ लोग कहते हैं कि पैसा हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ज़रूरी तो है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट एवरीथिंग। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे विच सर्व्स एज अ मेमोआर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांस टैक्स पेयर्स इन इंडिया। एक ऐसा इंसान जिसके लिए शायद पैसा सब कुछ था और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी था, लेकिन पैसा बनाने के जिन तरीकों को उसने अपनाया वो तरीके इस देश के कानून और अर्थव्यवस्था के खिलाफ थे। This is a story of how aspirations could transform into greed. This is a story of how money can lead to both the rise and fall of not just a person but an entire nation. This is the event from the archives of Indian economic history, which will always be remembered as Scam 1992, the Harshad Mehta story. Directed by Hansal Mehta and adapted from the book with the same name, written by Devashish Basu and Padam Shri Sucheta Dalal, Scam 1992 is an intriguing cinematic representation of how the Indian economy was taken aback by the gigantic and uncommon endeavors of a common man named Harshad Shantilal Mehta. I think he can also probably be called the Jordan Belfort of India, as his unimaginably swift climb in the world of stock market was something that became an inspiration and also an infamous example of rags to riches. घाटकोपर की चौल में रहने वाला एक सेल्समैन जिसके पिता का गारमेंट बिजनेस चौपट हो चुका था, उसने स्टॉक मार्केट की हवा में सांस लेने का और उस दुनिया में एक सक्सेसफुल ब्रोकर बनने का सपना देखा, और उस सपने को सच भी किया। लेकिन इस दुनिया का एक यूनिवर्सल रूल है जो छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हर्षद मेहता के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया। पैसा, नाम, शोहरत, बड़ा घर, एक्सपेंसिव वाइन एंड कार्स विच इंक्लूड एन इम्पोर्टेड टोयोटा लेक्सस, ये सब कमाने की कीमत हर्षद मेहता ने चुकाई, क्योंकि उसने ये सारी शान शौकत लोगों के भरोसे और दोस्ती को कुचल कर हासिल करी थी। और स्कैम 1992 हर्षद मेहता के इन्हीं सारे फैसलों को दर्शाने का एक बहुत अच्छा और कमेंडेबल अटेम्प्ट है। दिस एंटायर सीरीज इज अ बायोग्राफिकल ड्रामा, बट वॉट आई इंस्टेंटली लव्ड अबाउट इट is how the makers have utilized the power of exposition to also fuel an investigative storytelling. The first 5 episodes are dedicated towards setting up the character arc of Harshad Mehta with a flashback. A voiceover complements this direct attack with exposition. The audience becomes aware about the central character and what it wants to say in this story. The remaining 5 episodes are all about unraveling Harshad Mehta's deep trench of treachery and other malicious activities. This means that every secret of the character is revealed only when the audience needs it the most. The theme of this show is also about the world of finance and how it functions. So, the makers ensure that they explain each and every bit about the stock market and the financial world in order to maintain the comfort level of the audience at all times. This also eliminates a possible limitation of reaching the audience in large numbers. I mean, someone who is absolutely unaware about Harshad Mehta and the stock market can still feel emotionally attached with series, which is amazing. The cinematography of the series is also a strong driving force that helps the audience to imbibe the depth of the narrative. The initial choice of using a 1.33:1 aspect ratio is a marvelous way of depicting the overall landscape of Bombay in 1980s. Also, you will notice that before Harshad Mehta became the Harshad Mehta, this 1.33:1 aspect ratio signifies his state of feeling trapped, rejected, and the inability to do something big in his life. Plus, the color grading is also not very intense, and the use of the black and white palette is very suitable for specific moments. And finally, we have the excellent background score that does a great job of balancing the pace of the narrative and also give you those emotional thumps during the high points in the story. If you want to fully immerse yourself in this series, don't miss the end credits of every episode.
spend some time acknowledging those genius folks behind the camera, and also enjoy an intelligent selection of iconic music tracks from that era that are synchronized really well with the final acts. Now it's time for you to tell me your thoughts about this series in the comments down below, and I will see you soon in the next video. Till then, my name is Porush. Thank you so much for watching the 70mm show. Long live cinema. You can support this channel by hitting the red subscribe button and pressing the bell icon so that you don't miss any new future video.